Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, today we are going to start chapter number 7, that is e commerce and chatting. So, students, please open your book. So, what is e commerce and chatting? So, we know many things about internet. Now, we will learn about e commerce and chatting using internet. Okay, students? So, what is e commerce? E commerce or electronic commerce is the buying and selling of products and services by businesses and consumers over the internet. Okay students, so what is e-commerce? E-commerce का मतलब होता है buying and selling the products. आप चीजों को खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना या खरीदना किससे, बिजनेसेस से या कंज्यूमर से ओवर द इंटरनेट, उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स. It includes a real-time transfer of funds from buyer to seller, and sometimes this is handled manually through an EFT post terminal once a secure order is received by the merchant. Okay, so ये real time fund transfer भी होता है, transfer of funds होता है, ठीक है, buyer to seller. Okay, जिस टाइम में आपको जो भी सामान की डिलीवरी चाहिए या सेंड कराना है तो वो उसी समय के दौरान ही पहुंचता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो Internet sales are increasing rapidly as the consumer take advantage of lower prices offered by wholesalers retailing their products through e-commerce. अब जो इंटरनेट सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही हैं. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एडवांटेज लेते हैं, डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर से या रिटेलर से, होलसेलर से सामान खरीद लेते हैं, राइट. सो देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ई कॉमर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज अ बिग पार्ट. E-commerce is a big part of the web which enables the online buying and selling of the goods and services. So for buying, we have the convenience of shopping at home. Customers can conduct price comparisons easily, reading reviews from other users. We can have good delivery to our door. Okay, feedback can be immediate. Okay students, so these are the convenience we got when we buy products online. Okay, so पहली चीज क्या होती है कि बहुत easily convenience होता है shopping at home, right. You can sit at one place and search for many items, unnumberable items that you want to buy or sell. Okay students, now if you want to buy anything, the customer can conduct price comparisons easily, right. If you think that the price is very high, then you can search for another website. You can go to the another website and search the same product at lower price, right. Reading reviews from other users, even if you want to search any product and if you want to check that if this product is good or not, whether जब हम इसको मंगा लेंगे घर पे तो ये खराब तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए आप रिव्यूज भी रीड कर सकते हैं. ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि बाकी लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है. वी कैन हैव गुड्स डिलीवर टू आवर डोर, हमारे घर तक गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता. फीडबैक कैन बी इमीडिएट, और आप उन्हें फीडबैक भी दे सकते हैं आप अपना डिलीवरी लेने के बाद, राइट स्टूडेंट्स. एंड फॉर सेलिंग, द वेब ऑफर्स लो ओवरहेड. ओके, सेलिंग के लिए भी आप वेब पर सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि वो लो ओवरहेड होता है. फ्री एंड लो कॉस्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको फ्री मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं. पोटेंशियल ऑडियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, आपको एक पोटेंशियल ऑडियंस मिलती है of millions of people for selling your products, right students. Now shopping cart, while shopping, so हमें एक option दिखता है shopping करते हुए, that is shopping cart. So what is the meaning of the shopping cart? While shopping online using e-commerce, we usually add items that we want to purchase to a virtual shopping cart that keeps a track of these items and quantity, right. So जब भी हम कोई ऑनलाइन हम e-commerce करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें कुछ आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें कार्ट में ऐड कर लेते हैं. जब हम कार्ट में ऐड कर लेते हैं तो ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स ट्रैक होते रहते हैं और उनकी क्वांटिटी भी ट्रैक होती रहती है, राइट. मोस्ट साइट्स हैव अ व्यू कार्ट लिंक that enables us to view the contents of our shopping cart. Okay, now the cart usually has a link to proceed to checkout that takes us to the page where we will provide the information about our address and payment. जब भी आप अपनी कार्ट में कोई सामान डालते हैं कि आपको लेटर ऑन वो परचेज करना पड़े, ओके, तो वो हमें एक पेज के पास एक पेज पर लेकर जाते हैं जहां पर हमारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि हमारा एड्रेस क्या है, ओके, और हमें कितनी पेमेंट करनी है. रिसर्च बिफोर परचेज ऑनलाइन, एंड यू कैन ऑल्सो रिसर्च बिफोर परचेजिंग ऑनलाइन. वेदर वी आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप और अ वीडियो कैमरा, यू शुड रिसर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट बिफोर परचेजिंग. परचेज करने से पहले आपको रिसर्च करना है, चाहे आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, वीडियो कैमरा खरीद रहे हैं. ऑन द वेब वी कैन find many reviews on the products and some of those are quite useful. हम जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसके नीचे उसके रिव्यूज होते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है, जिन लोगों ने यूज किया है उन्हें कितना यूजफुल रहा है वो, राइट. द
Web has plenty of places to test and tell us the advantages and disadvantages of each item. Okay, students. Now, what are the types of e-commerce? So these are the types of e-commerce: business to business, that is B2B. The second is business to consumer, that is B2C. Third is peer to peer, that is P2P. Okay, so these are the types of e-commerce, and we will read them one by one. So what is business to business, B2B? B2B stands for business to business. It consists of largest form of e-commerce. This model defines that buyer and seller are two different entities. It is similar to manufacturer issuing goods to the retailer or wholesaler. Okay, students. So next is a one business of manufacturing can sell its product or buy its product to the retailer or wholesaler. Okay, students. Second is business to consumer. B2C is the indirect trade between the company and the consumers. It provides direct selling through online. Okay, you can directly sell through online. For example, if you want to sell goods and services to the customer so that anybody can purchase any product directly from the supplier's website, directly interact with the customers is the main difference with other business model. Okay, as B2B, it manages direct relationship with consumers, and B2C supply chains normally deal with business that are related to the customer. Okay, so what does a B2B do? It directly manages a relationship with the consumers. Okay, but B2C supply chains normally deal with business. Okay, जो कि chains जो business से deal कर रही हैं उन chains को अपना product supply करता है that are related to the consumer. Okay, students. Next is peer-to-peer. So peer-to-peer network architecture eliminate the direct top-down relationship between clients and their servers in favor of linking each connected individuals as a peer. So what does it do? So ये जो peer-to-peer network है ये eliminate कर देता है direct top-down relationship between clients and their servers. Okay, in favor of क्यों करता है ये eliminate? क्योंकि in favor of linking each connected individuals as a peer. जितने भी उस पे individuals connected हैं वो सभी क्या हैं? Peer हैं. Users in P2P network can pool their resources and sharing each other's files, storage systems and applications. So इधर क्या होता है कि they can pool their resources, okay, and sharing each other's files. सभी peers हैं वो एक दूसरे की फाइल भी शेयर करते हैं, storage system शेयर करेंगे, applications, and thereby paving the way for extensive collaboration and efficient information sharing. इतना ज़्यादा extensive collaboration होता है, extensive information sharing होती है और जिसकी वजह से business आगे बढ़ता है, right? Next type of e-commerce is consumer to consumer, that is C2C. C2C stands for the consumer to consumer. It helps the online dealing of goods and services among people. Though there are no major parties needed, वैसे तो डायरेक्टली कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं तो बीच में कोई मेजर पार्टीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन बट द पार्टीज विल नॉट फुलफिल द ट्रांजेक्शन. वो ट्रांजेक्शन कैसे पे करेंगे विदाउट द प्रोग्राम? सो विच इज सप्लाइड बाय द ऑनलाइन मार्केट डीलर सच एज eBay. Okay, students. Next, we will read about the mobile commerce. So mobile commerce deals with the conducting the transactions with the help of mobile. We can do the transactions with the help of mobile. The mobile device consumers can interact with each other and can lead the business. Okay, so what does this mobile device do? With the mobile device, the consumers can interact with each other, right, and can lead the business. And mobile commerce involves a change of ownership and the rights to utilize goods and related services. Okay, now we will read about the online shopping. So there are mainly online shopping websites which allow us to buy and sell products. So there are many online shopping websites which allow us to buy and sell products. So following are the steps given to shop online to buy a product. Okay, so open the Internet Explorer and type the address of any shopping website. So आप क्या करेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई भी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे और वहां पर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग का आप एड्रेस मेंशन करेंगे, राइट? द होम पेज ऑफ द वेबसाइट विल ओपन, सर्च द प्रोडक्ट वी वांट टू बाय. आप सर्च करिए प्रोडक्ट जो भी आपको बाय करने हैं. रीड द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट. अब जब भी स्पेसिफिकेशंस रीड करेंगे उसके बाद क्लिक ऑन बाय नाउ टू बाय द प्रोडक्ट. ओके, द कार्ड विंडो विल अपीयर. Click on the proceed to pay. If we have created an account, enter the details correctly. If we have not created an account, we can create account. Then how can we create an account? First of all, you have to mention your email ID, enter the password, re-enter the password, and click on sign up. Okay, students. First name you have to mention, last name, enter the shipping address, click on the ship to this address. तो आपका सामान उस एड्रेस पर पहुंचेगा. The mode of payment option will appear. Click on any one option. Okay. So they click on confirm payment. After paying, click on confirm payment. The confirm order page will appear. Click on confirm order. Okay, students, the order confirmation page will appear as shown below. So this is how the order confirmation page looks like. Okay, we will get the updates on our order on our email ID and contact
number. Okay students, now what are the security concerns we have to keep in mind while doing e-shopping, right? Shopping online nowadays is a very secure, reliable and reputable, right? When we purchase goods and services online, जब हम खरीदते हैं, the vendor asks us to provide accurate payment data. This almost always means typing a credit card number and the card's expiry date, often the card security code, okay, along with our name and address. It is vital that this sensitive data does not fall into the wrong hands. अब आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट या फिर सिक्योरिटी कोड ये गलत हाथों में ना जाए, ये गलत जगह ना जाए. सो वी नीड टू इंश्योर दैट वी प्रोवाइड दिस ऑनलाइन डेटा ओनली अ सिक्योर साइट. तो आप ये डेटा सिर्फ एक सिक्योर साइट पर ही अपलोड करेंगे, कहीं और इसे आपको नहीं मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, द वेबसाइट एंड अ वेब ब्राउजर डिस्प्ले वेरियस इंडिकेटर्स टू इंश्योर दैट वी आर एंटरिंग आवर कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑन अ सिक्योर साइट. ऑन अ साइट लुक्स अप फॉर HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो HTTPS होना चाहिए, ना कि HTTP इन द साइट एड्रेस. एंड लुक फॉर द सिक्योरिटी आइकन सच एज वेरी साइन सिक्योर्ड. और आपको ये ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी साइन क्या लिखा हुआ है, वेरी साइन सिक्योर्ड. इन द वेब ब्राउजर लुक फॉर द लॉक आइकन समवेयर इन द ब्राउजर विंडो. आपको लॉक आइकन को देखना है कि कहाँ पर है लॉक आइकन. इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, द एड्रेस बार शोज अ ग्रीन बैकग्राउंड फॉर अ सिक्योर साइट. जब भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो यूज करते हैं तो वो ग्रीन बैकग्राउंड दिखाएगा सिक्योर साइट के लिए. ओके स्टूडेंट्स, next we will learn about chatting. So on the internet, chatting is talking to other people who are using the internet at the same time that you are using, right? So usually typed messages are exchanged requiring one site as the repository for the messages and a group of users who take the part from anywhere on the internet. So chatting क्या होती है, जब आप ऑनलाइन हैं और बाकी लोग भी ऑनलाइन हैं और उस टाइम पे जो भी बातचीत होती है इंटरनेट के थ्रू उसे हम चैटिंग कहते हैं. ठीक है, यूजुअली जो टाइप मैसेज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं एक साइट से. ठीक है, एंड वी कैन गेट द रिस्पॉन्स through the group of users or the single person from anywhere on the internet. Okay students, a chat can also be conducted using sound or a video. Okay, तो chat हो सकती है वीडियो के थ्रू या फिर साउंड के थ्रू भी हो सकती है. Okay, assuming you have bandwidth access and appropriate programming. आपके पास अगर bandwidth access या फिर appropriate programming है तो आप वीडियो कॉल के थ्रू या फिर ऑडियो कॉल्स के थ्रू चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ठीक है, next is downloading Yahoo Messenger. We can download Yahoo Messenger to chat with our relatives and friends. क्यों यूज करते हैं हम Yahoo Messenger? To chat with our relatives and friends. Okay students, following are the steps given to download Yahoo Messenger. How can you download it? So open the Internet Explorer and type following link in the address bar, that is http://messenger.yahoo.com/. okay, so this is the address of the Yahoo Messenger box. Okay, now you have to click on the download. Now the file download box will appear. Click on the save button. The save as box will appear. The save the file on the desktop. The file will be saved on the desktop and same smiling Yahoo face on the desktop. Okay, step 5 is double click on the smiling face. Now we will see the open file box. Click on the next button. The installation will start and complete. Okay, now if we already have Yahoo email, just type in Yahoo email ID and password. Now start chatting with the relatives and friends. If you do not have the Yahoo email ID, then just click on the get a new Yahoo ID on the messenger. Okay students, it will open up the web page with form to get our new Yahoo email ID. Okay students, now we will learn about the tips while chatting. What are the tips you have to keep in mind while chatting? So what should we do? Check the terms and condition privacy statements of the chat site before we begin chatting. किसी भी chat site पे बात नहीं करनी है, उससे पहले आपको terms देखनी, condition देखनी है, privacy statements देखनी है. Use a chat nickname that does not give away any sensitive information. एक chat nickname जरूर use करें ताकि आपकी sensitive information reveal ना हो. Okay students, now what should we not do? अब हमें क्या नहीं करना चाहिए? We should not give a personal information in our chat room. जब भी आप chat room में हैं तो आपको अपनी personal information नहीं देनी है. Do not agree to meet in person with someone we have talked to in the chat room. जब भी वो अगर बोल रहे हैं कि पर्सनली मिलिए तो आपको नहीं मिलना है जिससे आपने चैट रूम में बात की है. टिप्स वाइल इंस्टॉलिंग मैसेजिंग. जब भी हम इंस्टॉल करेंगे मैसेजिंग तो क्या ध्यान रखना है आपको? व्हाट शुड वी डू? कम्युनिकेट ओनली विद पीपल ऑन आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट. उन्हीं से कम्युनिकेट करें जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, बाकी किसी से कॉन्टैक्ट ना करें जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है. यूज अ स्क्रीन नेम दैट डज नॉट गिव अवे एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. दैट कैन बी योर निकनेम. ओके, चिल्ड्रन शुड नॉट एक्सेस IM. ओके, चिल्ड्रंस को
चिल्ड्रेन को नहीं यूज करना इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट शुड वी नॉट डू, और हमें क्या नहीं करना है। डू नॉट प्रोवाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड नंबर हो, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, पासवर्ड हो या एड्रेस हो, कोई नहीं देना है in an IM conversation, that is instant messaging conversation. Instant messages are not encrypted, वो encrypted नहीं होते हैं, so they are easily targeted for the hackers. ये hackers easily उसे target कर सकते हैं और आपकी information को ले सकते हैं। Okay, do not agree to meet an unfamiliar person we came into contact with on IM. कोई भी अनफेमिलियर पर्सन जिसे आप नहीं जानते, अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में आता है इंस्टेंट मैसेजिंग पर, तो अगर वो आपको मिलने के लिए बोल रहे हैं तो डोंट मीट दैट पर्सन। ओके, वी कैन नेवर नो दैट हु दैट पर्सन रियली इज, हमें नहीं पता वो पर्सन कौन है। डू नॉट डाउनलोड और एक्सेप्ट फाइल्स फ्रॉम अननोन पीपल, कभी भी अननोन पीपल से भेजी गई फाइल्स या डाउनलोड्स को कभी डाउनलोड ना करें। डू नॉट सेंड स्क्रीन नेम ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन नहीं भेजना अपना स्क्रीन नेम, पीपल माइट फाइंड इट एंड यूज इट टू सेंड अस अनसॉलिसिटेड इंस्टेंट मैसेजेस। ओके, लोग उसे गलत तरीके से यूज करके आपको अनसॉलिसिटेड इंस्टेंट मैसेजेस भेज सकते हैं, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Conducting a conference between two or more participants at different sites by using computer networks to transmit audio and video data is known as video conferencing, right? For example, two-person video conferencing system works much like a video telephone, right? So each participant has a video camera, microphone, and speakers mounted on the computer. As two participants speak to one another, their voices are carried over the network and delivered to others speakers, and their images in front of the video camera appear in a window on the monitor. Okay, so multi-point video conferencing allows three or more participants to sit in a virtual conference room and communicate as if they were sitting right next to each other. Okay students, so this is how video calling works. Now students, we are done with this chapter. We will go through the backup menu points that are the most important points of this chapter. So your very first point is e-commerce or electronic commerce is the buying and selling of the product, services by businesses or consumers over the internet. On the internet, chatting is talking to other people who are using internet as the same way as we are. A chat can also be conducted using sound or sound and video, assuming that you have the bandwidth access and the appropriate programming. Okay, we can download Yahoo Messenger to chat with our friends and relatives. Conducting a conference between two or more participants at different sites by using computer networks to transmit audio and video data is known as video conferencing. Okay students, so there how we have gone through the backup menu points. So hope you like this chapter, hope you understood this chapter students very well. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Thank you, all the best.